Hello students, a very good morning to all of you. I Anupama welcome you all at the Savil classes. So today we are going to start our lecture number 7 of the English MCQs second series for the Master Cadre 2021. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सीरीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स राइट लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को आप लोग बहुत स्टूडेंट्स लाइव बैठे होते हैं बट लाइक्स बहुत कम होते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सीरीज फॉर टुडे मैथ्यू आर्नल्ड स्टार्टेड हिज करियर एज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल a teacher at rugby school, an editor of the critical journal या an assistant to a publisher. हाँ जी, किस तरीके से आर्नल्ड ने अपना करियर स्टार्ट करा था? वेरी राइट, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल. बिल्कुल सही, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल. क्वेश्चन नंबर 2. विक्टोरियन एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रिफॉर्म्स, एनार्की और डेमोक्रेसी. हाँ जी, विक्टोरियन एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रिफॉर्म्स, anarchy या democracy. What will be the correct answer? It will be both A and C. Right. Reforms हो रहे थे, democracy आई हुई थी. Right? हाँ जी. Question number 3. Which class triumphed during the Victorian age having their belief in progress? कौन सी क्लास जो है विक्टोरियन एज में आगे आ रही थी? अरिस्टोक्रेटिक क्लास, मिडिल क्लास, प्रोलिटेरियट क्लास या लेबर क्लास? हाँ जी, which class was coming forward because of their idea of progress? Absolutely right again, it was the middle class, right? Middle class. Question number 4. How many volumes of Bells and Pomegranates written by Robert Browning exist? Bells and Pomegranates की कितनी volumes exist करती हैं? 6, 7, 8 or 9? How many volumes of Bells and Pomegranates exist? Right, there are total 8 volumes. Very right, there are total 8 volumes. Question number 5. Which Shakespearean play inspired Child Rolla to the Dark Tower Came? Poem written by Robert Browning. Child Rolla to the Dark Tower Came को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी? The Tempest, King Lear, Macbeth और Henry V. शेक्सपियर के कौन से ड्रामा से इंस्पायर्ड थी ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग की? वेरी राइट अगेन, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स किंग लियर. एब्सोल्युटली राइट, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स किंग लियर. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 6. In how many volumes Browning's longest work, The Ring in the Book, is available? हाँ जी, Ring in the Book की कितनी volumes और कितने monologues उसमें available हैं? 4 volumes and 10 monologues, 3 volumes and 8 monologues, 4 volumes and 8 monologues या 4 volumes and 9 monologues? There are total, very right, 4 volumes and 10 monologues. वैसे total 12 characters हैं, ठीक है, वैसे total 12 characters हैं इस poem में, बट 10 के मोनोलॉग्स हैं, ठीक है, लेकिन 10 के मोनोलॉग्स हैं. क्वेश्चन नंबर 7. कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री एज एनंसिएटेड बाय मैथ्यू आर्नल्ड इन द स्टडी ऑफ पोइट्री. डेफिनेशन कंप्लीट करनी है आपको पोइट्री की. पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, is criticism of life governed by the laws of poetic truth and poetic beauty, is just and lively image of human nature to delight and instruct mankind, is an imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude. How will you complete the definition of poetry according to Matthew Arnold? Right, it is criticism of life governed by the laws of poetic truth and poetic beauty. Very right answer, very right. Question number 8. Which of the following historical events does the Charge of the Light Brigade written by Tennyson describe? The Charge of the Light Brigade के पीछे कौन सा historical event आता है? D-Day, the Battle of Waterloo, the Battle of Bull Run या the Crimean War? What is the background of the Charge of the Light Brigade? Very right. It is the Crimean War. Absolutely right. Crimean War. Question number 9. With which poem Robert Browning paid a tribute to John Keats? Robert Browning ने किस poem के साथ John Keats को tribute pay किया था? Pauline,
माई लास्ट डचेस, पॉपुलैरिटी या सॉर्डेलो? With which poem Robert Browning paid a tribute to John Keats? हाँ जी, राइट, इट वॉज द पोएम पॉपुलैरिटी। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन अपने एमसीक्यूज में ऐड करा हुआ था, तो तब भी मैंने आपको बताया था इट वॉज पॉपुलैरिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द नोशन ऑफ क्रॉसिंग द बार इज अ मेटाफर फॉर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग द बार? प्रेइंग टू गॉड, डाइंग, becoming an attorney, or growing old? What do you understand by the phrase crossing the bar? Yes, crossing the bar means dying. Very right. It is a poem by Tennyson. Right? Tennyson की poem है ये. And it means dying. Absolutely right. Question number 11. Which of the following is true of each section of In Memoriam, the elegy written by Tennyson for his friend? इनमें से इन मेमोरियम के बारे में कौन सा सेंटेंस, कौन सी स्टेटमेंट सही है? Each section stanzas are in rhyming quatrains. Each is written in iambic pentameter. Each mentions the death of Arthur Henry Hallam, and each is set at Cambridge University. Which of these is true of In Memoriam? Very right. They are written in rhyming quatrains. ठीक है? 4 lines का stanza है. पूरी की पूरी पोएम में there is a 4 line stanza. Right. बचे नहीं. लास्ट जो है वो उसकी बहन के बारे में ना, लास्ट इज एपिथेल्मियन, तो सारे के सारे आर्थर हेलम के बारे में नहीं है, लास्ट इज एपिथेल्मियन, राइट। तो फर्स्ट वाली बात जो है ट्रू है, ऑलराइट। क्वेश्चन, और आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है, राइट, इट इज नॉट रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, इट इज आयम्बिक टेट्रामीटर, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 12, this poet might be described as moral or philosophical critic for arguing that works must have high seriousness. Which critic believes in high seriousness? T.S. Eliot, Virginia Woolf, Elizabeth Barrett Browning, या Matthew Arnold? Who believes in high seriousness? Right, it is Matthew Arnold. Very right, it is Matthew Arnold. All right. Question number 13. Poetic style of Robert Browning was charged with. रॉबर्ट ब्राउनिंग के पोइटिक स्टाइल पे किस चीज का इल्जाम लगाया गया था? ऑब्सक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, वियर्डनेस ऑफ थीम्स या वल्गैरिटी? विद व्हाट Robert Browning's poetic style was charged? Very right again. It was charged with obscurity. Very right. It was charged with obscurity. Question number 14. What is the message of Tennyson's poetry? Tennyson की पोइट्री से हमें क्या मैसेज मिलता है? Hopelessness, faith and trust, anger या doubt? What is the message of Tennyson's poetry? हाँ जी, very right again. It is faith and trust. Absolutely right. It is faith and trust. All right. Question number 15. The touchstone method propounded by Matthew Arnold in his essay Study of Poetry Values. Touchstone method किस चीज को वैल्यू करता है? All literary pieces, only the best writing, only the English writers या only the Greek classics? किस चीज को वैल्यू करता है touchstone method? Very right. Only the best writing. Very right. The best writing. ठीक है जी। Question number 16. Matthew Arnold is regarded as the father of modern literature, criticism, poetry या modern literary criticism? Matthew Arnold is regarded as the father of modern literature, criticism, poetry or modern literary criticism. Right, again, he is regarded as the father of modern literary criticism. Father of criticism is John Dryden. Father of criticism is John Dryden. Right? And he is the father of modern literary criticism. Okay. Question number 17. Dash is a brief and indirect reference to a person, place, thing or idea of historical, cultural, literary or political significance. Brief and indirect reference. It's an allegory, it's character, it's allusion या satire. Very right again. Brief and indirect reference is allusion. बिल्कुल सही.
Allusion is the brief and indirect reference. Question number 18. To err is human, to forgive divine. The above statement is an example of paradox, antithesis, irony या oxymoron. ये statement किस चीज का example है? Is this the example of paradox, antithesis, irony या oxymoron? To err is human, to forgive divine. Again, you all are giving me the right answer. It is antithesis, right? दोनों के दोनों opposites आ गए. Mistake and माफी, ठीक है? Err and forgive, opposites आ गए. बिल्कुल सही. Question number 19. What is the subtitle of Matthew Arnold's critical work on translating Homer? On translating Homer का subtitle बताना है आपको. 3 words said at Oxford, 3 lectures given at Oxford, 3 lectures given at Oxford, 3 lectures given to Oxford. हाँ जी, it is 3 lectures given at Oxford, right? 3 lectures given at Oxford. Question number 20. Which out of these poems Robert Browning was badly denounced and criticized? इनमें से कौन सी पोएम्स के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सहनी पड़ी थी? सॉर्डेलो, पॉलिन, पिपा पासेस या इवलिन होप? For which of the poems Robert Browning was very much condemned and criticized? Very right, it is Sordello. Right, it is Sordello. Yes. Question number 21. Who is murdered by Count Guido Camparini in the narrative poem The Ring and the Book? किसका मर्डर करता है काउंट गाइडो कैम्पारिनी? डेस्डेमोना का, पोम्पिलिया का, कैल्पुर्निया का या पोर्शिया का? Who is murdered by Count Guido Camparini? Yes, he murders his wife Pompilia because of her affair, right? Because of her affair with another person. All right. Question number 22. How many years did Tennyson take to complete his elegiac work in memoriam? कितने सालों में कंप्लीट करा था टेनिसन ने इन मेमोरियम? 15 years, 16 years, 17 years या 14 years? In how many years did Tennyson complete his in memoriam? Right, 17 years. He started in 1833 and completed in 1850, right? So it makes 17 years. All right, very good all of you. Question number 23. How would you classify the poem Tithonus written by Tennyson? Tithonus is a dramatic monologue, lyric, ode or elegy. What is the genre of Tithonus written by Tennyson? What is the genre of Tithonus written by Tennyson? It is a dramatic monologue. Very right again. Brilliant of you, students. Brilliant of you. It is a dramatic monologue. Question number 24. Defense of Lucknow is a poem written by Tennyson. Is based on Indian mutiny during which Lucknow was besieged during the Indian Rebellion of 1857. For how many days the residency of Lucknow was besieged? कितने दिनों के लिए लखनऊ को बिसीज किया गया था, लखनऊ की घेराबंदी करी गई थी? 80 days, 85, 87 and 82. अगेन यू ऑल आर करेक्ट. 87 years. आप लोगों ने तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही आंसर्स देने शुरू कर दिए. वेरी राइट. फॉर 87 days. राइट, 87 days. क्वेश्चन नंबर 25. Which was the first drama written by Robert Browning? रॉबर्ट ब्राउनिंग का लिखा हुआ फर्स्ट ड्रामा कौन सा है? बाय द फायरसाइड, स्ट्रैफर्ड, एसोलैंडो या एब्ट वॉगलर? Which of these is the first drama written by Browning? It was Strafford. Very right again. Strafford. बिल्कुल सही जवाब आप सबका. Strafford. Question number 26. What pseudonym was used by Matthew Arnold while writing The Strayed Reveller and other poems? कौन सा pseudonym यूज करा था मैथ्यू आर्नल्ड ने? M.A.T. या आर्न? What pseudonym was used by Matthew Arnold for publishing The Strayed Reveller and Other Poems? Very easy question it is. Matthew Arnold
यूज करते थे सूडोनिम ए, राइट, सिर्फ ए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर लाइफ सेक? आर्ट फॉर लाइफ सेक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टेनिसन ने, टीएस इलियट ने, वॉल्टर पेटर ने या मैथ्यू आर्नल्ड ने? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर लाइफ सेक? यस, आर्ट फॉर लाइफ सेक का कॉन्सेप्ट दिया था मैथ्यू आर्नल्ड ने, बिल्कुल सही, मैथ्यू आर्नल्ड ने। वॉल्टर पेटर ने दिया था आर्ट फॉर आर्ट सेक, राइट, आर्ट फॉर आर्ट सेक। वॉल्टर पेटर ही ब्रॉट इट टू इंग्लैंड, ठीक है, ही ब्रॉट इट टू इंग्लैंड। वैसे आर्ट फॉर आर्ट सेक का किसने दिया था? थियोफिल गॉटियर, राइट। वैसे आर्ट फॉर आर्ट सेक को किसने कॉइन किया था? थियोफिल गॉटियर, कॉइन किया था थियोफिल गॉटियर ने, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following poems of Tennyson won him the Chancellor's Medal at Cambridge? किस पोएम के लिए टेनिसन को चांसलर्स मेडल मिला था? लोटस ईटर, क्रॉसिंग द बार, टिम्बकटू या इन मेमोरियम? अरे वाह, फटाफट आंसर्स आ रहे हैं। टिम्बकटू। आप लोग तो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं सब चीजों के लिए। यू ऑल आर वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट, and you are definitely going to qualify the exam. You all are definitely going to qualify the exam. ये मेरी इंट्यूशन भी है और ये मेरी विशेस भी हैं, तो यू ऑल विल डेफिनेटली क्वालिफाई। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज टेनिसन बोर्न? टेनिसन का बर्थ किस ईयर में हुआ था? 1899, 1809, 1877 या 1855? किस ईयर में बर्थ हुआ था टेनिसन का? यस, ही वाज बोर्न इन 1809। वेरी गुड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच वाज टेनिसन्स फर्स्ट पब्लिश्ड बुक? टेनिसन की फर्स्ट पब्लिश्ड बुक कौन सी थी? मॉट द आर्थर, द लेडी ऑफ शेलट, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स या यूलिसिस? Yes, which of these was the first published book of Tennyson? It was Poems by Two Brothers, right? In collaboration with his brother. In collaboration, ठीक है, ये collaboration में थी टेनिसन की। All right. Question number 31. Tennyson's Mort the Author was written in 1935 and published in Mort the Author लिखा गया था 1835 में और पब्लिश कब हुआ था? कब पब्लिश हुआ था मॉट द ऑथर? 1830 में, 1831 में, 1833 में या 1835 में? I think the dates are wrong. I think the dates are wrong, है ना? और they are correct. आप लोग बताएंगे मुझे। हाँ जी, है ना, 1842 में, ठीक है, 1842 में। हाँ जी, हाँ जी, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है। Question number 32. Arnold defines poetry thus. Poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. इसका तो वैसे भी आंसर हमें ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है, रिपीट हो गया एक तरह से क्वेश्चन। किस एसे में आर्नल्ड ने पोइट्री की डेफिनेशन दी है? एसे ऑन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, एसे ऑन वर्ड्सवर्थ, एसे ऑन द स्टडी ऑफ पोइट्री और एसे ऑन शेली? Right again, essay on the study of poetry. Very right, essay on the study of poetry. Question number 33. From where did Arnold borrow the story of Sohrab and Rustam? Sohrab and Rustam की स्टोरी कहाँ से borrow करी है आर्नल्ड ने? The Arabian Nights, उमर खयाम, folk literature या फिरदौसी? कहाँ से borrow करी है सोहराब एंड रुस्तम की स्टोरी मैथ्यू आर्नल्ड ने? Yes, it is borrowed from फिरदौसी's शाहनामा, right? फिरदौसी के शाहनामा से, very right, very very right.
Question number 34. From which famous poem the following line is taken? And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and fight. ये जो लाइन है ये कौन सी पोयम से ली गई है? थायरेसियस, डबर बीच, द न्यू साइरन्स या सोहराब एंड रुस्तम? And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight. Very right. मैथ्यू आर्नल्ड की फेमस पोयम डवर बीच. राइट. मैथ्यू आर्नल्ड की बहुत ही फेमस पोयम जो शायद आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी भी होगी, डवर बीच. राइट. क्वेश्चन नंबर 35. रग्बी चैपल इज अ पोयम बाय मैथ्यू आर्नल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, बॉय, फादर या ब्रदर? किसकी मेमोरी में लिखी थी रग्बी चैपल? अगेन एन इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. वैसे तो सारे ही आसान हो गए हैं. अब आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो रही है कि सभी क्वेश्चंस आसान है. राइट, इट इज फादर. वेरी राइट, फादर. क्वेश्चन नंबर 36. पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स इन लिंग्विस्टिक्स आर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ या नन ऑफ दीज? पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स, दे आर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ या नन ऑफ दीज? हाँ जी. So paradigmatic relations are vertical. They are also called substitutional. All right. They are also called substitutional. Very right. Question number 37. Dash is referred to as the element or raw material of language. Element या raw material language का किसको बोलते हैं? Form, competence, performance या substance? हाँ जी. किसको बोलते हैं रॉ मटेरियल? इट इज सब्सटेंस. वेरी राइट, सब्सटेंस को. क्वेश्चन नंबर 38. रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज वन ऑफ मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट्स, मोस्ट एग्नोस्टिक पोएट्स, मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट्स या मोस्ट अथीस्टिक पोएट्स? कैसे आप डिफाइन करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग को? ही वॉज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट, मोस्ट एग्नोस्टिक पोएट, मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट या मोस्ट अथीस्टिक पोएट? वेरी राइट अगेन, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट. बिल्कुल सही, ही वॉज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक. क्वेश्चन नंबर 39. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक वर्क ऑफ मिस्टर ब्राउनिंग वॉज? मिस्टर ब्राउनिंग, हाँ जी, ब्राउनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक वर्क कौन सा था? होली सोनेट, सोनेट्स, सोनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज या बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स? हाँ जी. Which one of these was the most important poetic work of Robert Browning? Right again, it is Bells and Pomegranates. ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी 8 वॉल्यूम्स पब्लिश हुई थी. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 40. Which poem of Robert Browning begins with the lines "Grow old along with me, the best is yet to be"? हाँ जी, ब्राउनिंग की कौन सी पोएम में से ली गई हैं ये लाइंस? Grow old with me, the best is yet to be. Home, Thought from Abroad, Rabbi Ben Ezra, The Lost Leader या The Last Ride Together? These lines are taken from, right, it is taken from Rabbi Ben Ezra. Very right, it is taken from Rabbi Ben Ezra. Grow old with me, the best is yet to be. कि ओल्ड एज में ही तो, ओल्ड एज ही तो बेस्ट टाइम है. ठीक है, ओल्ड एज जो है दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ. That is the best time of life. So that is in Rabbi Ben Ezra. Question number 41. Browning wrote a poem entitled The Lost Leader. Whom does he call the lost leader? Browning ने किसको lost leader बोला है? मिल्टन को, बायरन को, वर्ड्सवर्थ को या टेनिसन को? Again, I know answers will be coming very quickly. Yes, the lost leader is William Wordsworth. Very right. The lost leader is William Wordsworth. Question number 42. Browning wrote a poem in the memory of his wife who had died some time back. कौन सी पोएम लिखी थी अपनी वाइफ की मेमोरी में ब्राउनिंग ने? The Lost Leader, Home Thoughts from Abroad, Pippa Passes या Prospice? कौन सी पोएम लिखी थी ब्राउनिंग ने इन द मेमोरी ऑफ हिज डेड वाइफ? राइट, इट इज Prospice. एंड प्रोस्पाइस का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज लुकिंग फॉरवर्ड. राइट,
प्रोस्पाइस का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज लुकिंग फॉरवर्ड. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 43. हु इज द स्पीकर ऑफ माई लास्ट डचेस? माई लास्ट डचेस का स्पीकर कौन है? ड्यूक ऑफ फरारी, ड्यूक ऑफ फरेरा, ड्यूक ऑफ सोमरसेट या ड्यूक ऑफ क्लेरेंस? हु इज द स्पीकर ऑफ माई लास्ट डचेस? हाँ जी. So the speaker of my last duchess is Duke of Ferrara. Very right. It's Duke of Ferrara. Very good answer. Very good. चलिए क्वेश्चन नंबर 44. Poetic style of Browning was charged with. This question repeated by mistake. Obscurity है ना. Question number 45. Dash is a particular way of pronouncing words that is connected with the country, area or social class that you come from. Pronunciation, accent, register या isogloss. Particular way of pronouncing words. क्या बोलते हैं हम उसको? Pronunciation, accent, register या isogloss? हाँ जी. Particular way of pronouncing words is called accent. Very right. इसीलिए हम बोलते हैं ना British accent, British accent, American accent. ठीक है. अमेरिकन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट. ठीक है. तो वो किसकी वजह से होता है? प्रोनाउंसिएशन की वजह से. वोकैबुलरी सब सेम होती है लेकिन बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 46. डैश इज एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक यूज ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग स्पीच. सोशियोलेक्ट, डिसग्लॉसिया, आइडियोलेक्ट या एक्सेंट? हाँ जी. Individuals' distinctive and unique use of language. It is idiolect, right? Individual का idiolect होता है, right? जैसे कोई बंदा रिक्शा को रिश्का बोलता है ना. मसाले को समाला बोलता है, रजाई को जराई बोलता है. वो एक बंदे का अपना पर्टिकुलर का है, राइट? इंडिविजुअल का है. सो दैट इज idiolect. बाकी सारे लोग तो ऐसे नहीं बोलते ना. कोई कोई बंदा ऐसे बोलता है, राइट? सो दैट इज idiolect. दैट इज इंडिविजुअल. ऑल राइट. कोई जराई को रजाई को जराई बोलता है. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 47. Which cavity gets blocked when the soft palate is lowered? जब सॉफ्ट पैलेट लोअर होता है तो क्या ब्लॉक हो जाता है? नेजल, ओरल, बोथ या नन ऑफ दीज? हाँ जी. Which cavity gets blocked when the soft palate is lowered? It is the oral cavity. हाँ जी. So sounds कौन सी प्रोड्यूस होती हैं? Sounds produced are nasal sounds, right? Sounds produced are nasals, right? नोज हमारा खुल जाता है, ओरल कैविटी ब्लॉक हो जाती है, नोज हमारा खुल जाता है और साउंड्स जो प्रोड्यूस होती है नेजल साउंड्स. म, न, अंग, ये तीनों साउंड्स. बस सिर्फ ये तीन साउंड्स. क्वेश्चन नंबर 48. Which word will come in the word rope? A, B, C या D? हाँ जी. इस वर्ड में कौन सा वाउल आएगा? इस वर्ड में कौन सा वाउल आएगा? It will be this, right? It will be broke, right? It will be broke. Very good. Very good. So you all are getting good with linguistics as well. Very good. I am impressed. चलिए. Question number 49. Dash means cleansing in Greek. Refers to a literary theory first developed by philosopher Aristotle, who believed that cleansing our emotions was the purpose of a good story, especially tragedy. Yes, again very easy question. Cleansing. Tragedy ka goal. That is the goal of tragedy. Cleansing of our emotions. Hamartia, peripatia, catharsis या none of these? अरे वाह, फटाफट से सभी के क्वेश्चंस आए. Yes, it is catharsis. Very right. And the last question for today. What is defined as the study of sentence structure? Sentence structure की study को कैसे define करेंगे हम? Morphology, semantics, phonology या syntax? How would you define the study of sentence structure? Very easy question it is. Again,
Yes, it is syntax. Very right. It is syntax. Absolutely right. Okay. So for tomorrow, the writers which you have to prepare for tomorrow are Thomas Carlyle, Thomas Carlyle, John Ruskin, John Ruskin, Walter Pater, Walter Pater, Samuel Butler, Samuel Butler, राइट, एंड ब्रॉन्टे सिस्टर्स. ठीक है, इनके भी कोई ज्यादा काम नहीं है क्योंकि ब्रॉन्टे सिस्टर्स. ऑल राइट, जिसमें से कि आपको डिटेल में सिर्फ ब्रॉन्टे सिस्टर्स को पढ़ना पड़ेगा. बाकी सबके तो नेम्स ही याद करने हैं आपने. ठीक है, बाकी सबके तो नेम ही याद करने हैं आपने. बच्चे, सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग. सिमेंटिक्स इज स्टडी ऑफ मीनिंग, राइट. मीनिंग की स्टडी को सिमेंटिक्स बोलते हैं, राइट. बच्चे, आइसोग्लॉस इज रिलेटेड टू मैप. आइसोग्लॉस इज रिलेटेड टू द मैप. आइसोग्लॉस इज रिलेटेड टू मैप. ठीक है, जैसे मान लो हमने ये मैप बनाया, राइट. ये मान लो ये पंजाब का मैप है, राइट. और हमने इसको डिवाइड कर दिया, राइट, कि यहाँ पे मलवई पंजाबी बोली जाती है और यहाँ पे माझी की बोली जाती है, राइट. सो दिस इज मैप. आइसोग्लॉस इज मैप. बच्चे, वो सैम्यूल बटलर पोएट था, हुडी ब्रास वाला पोएट था. ये हमारा नॉवलिस्ट है, ये हमारा नॉवलिस्ट है. ऑल राइट. एपिग्राफ होता है, एपिग्राफ होता है बच्चे एक तरह का अल्यूजन होता है. ठीक है, एपिग्राफ होता है एक तरह का अल्यूजन, राइट. जैसे कि हॉलो मैन में टीएस इलियट ने किसी और वर्क में से कुछ रेफरेंस उठाना. ठीक है, जैसे कि हॉलो मैन में इलियट ने उठाया कर्ट्स वाला, ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस का, हार्ट ऑफ डार्कनेस का. ठीक है, तो दैट इज एपिग्राफ, राइट. कंसीट होता है फार फेच्ड कंपैरिजन. कंसीट इज फार फेच्ड कंपैरिजन. ठीक है, दो चीजें, ऐसी दो चीजें कंपेयर करना जिनका आपस में कुछ लेना देना नहीं होता, राइट. ऐसी दो चीजें, जैसे लवर्स को कंपेयर किया कंपस के साथ, राइट. जैसे लवर्स को कंपेयर किया कंपस के साथ, तो कंपस और लवर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है. ऑल राइट. एपिथेट होता है एक टैग. एपिथेट होता है एक तरह से एक टैग बंदे के लिए. ये जैसे स्पेंसर को कहा मुल्लाज बार्ड, जैसे स्पेंसर को कहा मुल्लाज बार्ड. All right. Okay, then we'll meet you tomorrow for the open lecture, for the MCQ session. Thank you, everyone. Have a very good day and just keep learning. Thank you so much, all of you. We will have class at 1 p.m. पेड ग्रुप की क्लासेस वही 1 p.m. से लगेंगी बच्चे, राइट. पेड ग्रुप की क्लासेस जो हैं 1 p.m. से लगेंगी. All right. Thank you so much, all of you.